हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन टू द लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई। जी हाँ बच्चों, अन अकेडमी के चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एंड मैं अमन गुप्ता, आपका अपना मैथ टीचर, यस, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आपकी क्लास 9th क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यू ऑल नो आई एम एमटेक ग्रेजुएट एंड फ्रॉम लास्ट 5 years रेगुलरली मेंटरिंग जेई और एनटीएससी स्टूडेंट्स। बट अगेन आई एम सेइंग एवरी टाइम, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ बच्चों, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट व्हाट द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम मी, कि आप मुझसे क्या क्या चीजें सीखते हो, द थिंग्स विच यू लर्न फ्रॉम मी ड्यूरिंग माई क्लास। एंड व्हाट इज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यस, इट्स एन रिवीजन क्लास। मैंने आपसे बोला था बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रॉपर रिवीजन क्लास लेकर आऊंगा। यस, आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स, दैट इज नंबर सिस्टम, देन पॉलिनोमियल, देन लीनियर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, ऑल दीज 4 चैप्टर्स, इन चारों चैप्टर्स के बच्चों 5 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट ऑल द कंसेप्ट्स विल बी क्लैरिफाइड टू यू। क्लियर है बच्चों? सो रेडी फॉर दैट, बी फोकस्ड, एवरीथिंग which is important for your half yearly exams we will discuss in this class. Before starting, quickly telling you about Unacademy. Yes, as you know guys, now we are on the number 1 in India on the e-education. Okay, what's the benefit you will get after taking Unacademy subscriptions? Unacademy के सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेनिफिशियल हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, यस, ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट्स। आपके सारे सब्जेक्ट्स की बच्चों डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आफ्टर फिनिशिंग एनी चैप्टर और एनी टॉपिक, एवरी टीचर टेक्स योर टेस्ट टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, जिससे आपकी मिस्टेक्स को हम रिमूव कर सकें और परफॉर्मेंस को ग्रैब अप कर सकें। स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जो आपके कोर्स स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है, वेल प्लानर परफेक्ट वे में डिजाइन किया गया है, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स। एंड लास्ट फीचर इज व्हाट, अनलिमिटेड एक्सेस। आपको बच्चों आपके कोर्स की मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस। जैसे यू मैनी टाइम्स हियर यू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनी मिसिंग लेक्चर्स। Suppose any 2 to 3 days you miss your class due to some reasons, so you need not to worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because you will get first video of that class plus PDF, and also you can clarify your doubt with your teacher in the next doubt discussion class. Yes, you know, on the plus after every 2 classes we have one doubt class. Okay guys, so these are the 4 key features of Unacademy plus subscriptions which you will get. Now, not only me but lot of educators across all parts of India, yes बच्चों, एक proper पूरी team है, not only a single teacher, across all part of India which are expert in their respective subject। जो सारे के सारे क्या है बच्चों, expert हैं अपने अपने respective subjects में। They all are ready to teach you, to guide you and to mentor you. Okay, so you need not to worry anything. Comprehensive syllabus, yes, you can also join us on Telegram app. Hope so you all have Telegram app, आप सबके पास Telegram होगी। करना क्या है बच्चों, आपने URL में जाकर ये लिंक टाइप कर देना है, http:/t.me quest 10th CBSE। URL में जाकर ये लिंक टाइप कर देना है बच्चों। आपने टाइप करने के बाद क्या करना है बच्चों, यस, यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग क्लासेज। लाइक व्हाट, सपोज 9 AM पर केमिस्ट्री में कौन सा लेक्चर होने वाला है, 11 AM पर मैथमेटिक्स में अमन सर की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस होने वाली है, 3 PM SST सोशल साइंस में हम बात करेंगे आपसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, एंड सपोज 7 PM पर मयंक सर, आपके मयंक गोयल सर, टॉप फैकल्टी, स्टार फैकल्टी ऑफ अवर फिजिक्स, यस, मयंक गोयल सर स्टार्ट करने वाले हैं सपोज मोशन।
क्या स्टार्ट करने वाले मैं अक्षर मोशन। सो लाइक दैट यू गेट ऑल द डेटा इन एडवांस, आपके पास पूरे दिन की प्लानिंग एडवांस में होगी कि व्हाट वी हैव टू डू। ओके यस, सो दैट जॉइन दिस लिंक एंड गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, चलिए सब्सक्रिप्शंस की बात करें बच्चों, व्हाट आर द ऑप्शंस यू विल हैव एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू यू, क्यों जरूरी है सब्सक्रिप्शन आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, आपको पता है इट्स अ कोविड-19 टाइम, yes or no, and this tough time we have to be safe and be alert। तो सेफ और अलर्ट रहना है, और वो कब हो सकता है, जब हम अपने घर पर ही रहें, बी ऑन द होम। डिफरेंट डिफरेंट ट्यूशन क्लासेस के लिए बच्चों हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर अगर रन अवे करेंगे तो आर वी सेफ फ्रॉम कोविड, टेल मी, नो। So for that, Unacademy subscription is very beneficial for you, and if you go for 12-month subscription, that cost you around 13500 only after applying my code SPAG10। बच्चों जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे SPAG10, you get 10% off in your subscription। That means your 1 year cost will be 13500 1125 पर मंथ, मतलब 1125 रुपए, 1125 रुपीज में आपको मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट्स। यू गेट द नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट विद द एक्सपर्ट फैकल्टीज। बट इफ यू आर प्लानिंग बिगर, हायर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर रहे हैं बच्चों, आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर 36 और 48 मंथ्स प्लान। इफ यू आर इन क्लास 10th, go with 36, 10th, 11th and 12th complete package, and if you are in class 9th, go with 9th, 10th, 11th and 12th complete package of 4 years। क्लियर है? यस, बिकॉज दैट इज द चीपेस्ट वन, सबसे सस्ता पड़ेगा आपको। पर मंथ कॉस्टिंग है बच्चों 750 रुपीज ओनली, और इसमें भी आप कोड अप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट 28,800 मीन्स यस। क्लियर है ऑल बच्चों? चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। और सबसे अच्छा फीचर जो है बेटा आपका, दैट इज नो कॉस्ट ईएमआई। आपको पूरा पैकेज किस में मिल रहा है बच्चों? ईएमआई में अवेलेबल है। तो यू नीड नॉट टू बी पैनिक दैट कि सर हमको फुल अमाउंट वन टाइम पे करना है। क्या आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो, नो इश्यू, बट पॉइंट इज व्हाट, आपकी स्टडी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, पार्ट पेमेंट करते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। इसके 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे। यस, बट बिफोर दैट क्विकली टेलिंग यू अबाउट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। क्विकली रिकॉल करते हैं चीजों को। नेचुरल नंबर्स आर व्हाट? नेचुरल नंबर्स आर दोज which we are used for general counting starting from 1 2 3 4 5 6 and so on। yes or no? ठीक है, natural numbers are those which we use for general counting and starting from 1। क्लियर होनी चाहिए बात सबको। नेक्स्ट इज व्हाट? होल नंबर्स। अब बच्चों होल नंबर्स क्या होते हैं? all the natural numbers including 0, all the natural numbers including 0। just a minute बच्चों, हम कंटिन्यू करेंगे वापस। ओके चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? all the natural numbers along with 0। सभी नेचुरल नंबर्स में मैं क्या करूं? 0 को और मर्ज कर दूं तो मेरा क्या बनेगा? होल नंबर्स। नेक्स्ट इज व्हाट? इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स along with 0 are called what? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या है बच्चों? ऑल नेचुरल नंबर्स और उन सबके नेगेटिव्स along with 0 are called what? Integers। and last and most important are what? Rational numbers। and you all know what are rational numbers? any number which can represent in the form of p upon q। ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, that is called
rational number while p and q must be an integer. p and q क्या होने चाहिए बच्चों? एक इंटीजर नंबर होने चाहिए. एंड while q will not equals to 0, q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए. क्लियर है यहां तक बात आपको? All are basic definitions. I am just recalling you so that we can go with the question properly. चलें, go. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, एंड यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल. वी स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम पार्ट 1. बच्चों डिटेल में देखना है आपको, ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपर वे में देखना है. देखो बच्चा, फर्स्ट पार्ट है हमारा रूट 16 माइनस 4. रूट 16 विल बी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. क्लियर? ए पार्ट डन. बी पार्ट 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 3. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, रेशनलाइज करेंगे इसको, तो 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 3. ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a प्लस बी, a माइनस बी. सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और न्यूमरेटर में होने वाला बच्चों आपका 3 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर. एंड व्हेन आई सॉल्व इट, इट विल बी a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 3 माइनस 2ab 6 रूट 3 divided by 9 minus 3. So that will be finally 12 minus 6 root 3 divided by 6, and answer will be 2 minus root 3. So what I am getting? Yes, B part is an what? Irrational number. You can see it, it is an irrational number. Yes. And similarly what I am seeing, this C part, root 5 plus 3, because root 5 is an irrational number, so that also be irrational, that also be irrational. And minus root 25, that is minus 5, and that is my irrational number. And again 0 upon 1 is also a rational number. So what I can say, A part and D part are rational number, and B part and C part are irrational numbers. Clear everyone? Is it clear everybody? Yes or no? Okay, चलिए next क्वेश्चन जो बच्चों 4 मार्क्स में इंपोर्टेंट रहेगा. दिस क्वेश्चन हैव द वेटेज ऑफ 4 मार्क्स. लुक इट वेरी केयरफुली. आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में 4 मार्क्स की वेटेज रखेगा. यस, आपको क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन टू यू? यू हैव x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3. okay, and what I have to tell? I have to tell the value of x plus 1 by x. So I have to find the value of 1 by x. That will be 1 upon 2 plus root 3 into 2 minus root 3 divided by 2 minus root 3. ओके, चलिए सॉल्व करेंगे बच्चों. तो a स्क्वायर 4 माइनस 3 2 माइनस रूट 3. दैट मीन्स 1 माइनस x विल बी व्हाट? 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1, और वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों? 2 माइनस रूट 3. चलिए, अब x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3. रूट 3 कैंसिल आउट. 2 plus 2 will be 4. Get clear? क्या किया बच्चों हमने? एक बार I can repeat you. Yes, the value of x will be 2 plus root 3 is given to me, and what I am doing, I am going to find the value of 1 by x. I am going to find the value of 1 by x. Okay, yes, 1 by x means 1 upon 2 plus root 3, and I am going to rationalize this number. What I am doing? Rationalizing of this number. So multiplying by 2 minus root 3 divided by 2 minus root 3. What I am getting? 4 minus 3. What I am getting?
4 minus 3 and numerator is 2 minus root 3. Okay, so 1 by x will be 2 minus root 3 upon 1 and my answer will be 2 minus root 3. क्लियर है पक्का? एंड अब हमने क्या किया बच्चों, x plus 1 by x, it is 2 plus root 3 and it is 2 minus root 3, and when we add both numbers that will be 4. Clear everybody? And this question have the weightage of 4 marks in your exams. आपके एग्जाम्स में आएगा बच्चों ये 4 marks में surely. Okay, चलिए. Now if x is equal to root 3 minus root 2 divided by root 3 plus root 2 and y is equals to root 3 plus root 2 and root 3 minus root 2, then what is the value of x square plus xy plus y square? अब you have to be focused guys. What I am seeing x and y both are irrational number. So first I have to simplify them by rationalization. So when I rationalize it, it will be root 3 minus root 2 divided by root 3 minus root 2. That will be a square 3 minus b square 2. Okay, and upper part will be root 3 minus root 2 whole square. That will be a square plus b square minus 2 root 6 divided by 1. So that will be 5 minus 2 root 6, the value of x. I think that should clear to everyone. बच्चों मैंने क्या किया है, I will rationalize the value of x which is given to me, and what I am getting the simplified value which is 5 minus 2 root 6. Same way I will rationalize y as root 3 plus root 2 divided by root 3 minus root 2. Rationalize करेंगे then it will be root 3 plus root 2 divided by root 3 plus root 2. Clear everyone? चलिए. Now it is a minus b, a plus b. Okay, it will be a square root 3 square minus root 2 square. ठीक है, and that will be root 3 plus root 2 whole square. Okay, so that will be now a square 3 plus b square 2 plus 2 root 6. Okay guys, चलिए आगे हम बात करें आपसे, then it will be 3 minus 2, so that will be 5 plus 2 root 6 divided by 1. यानी कि बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 minus 2 root 6 और y की वैल्यू हमारे पास है 5 plus 2 root 6. Let's see. Now you have to do a short trick here. Yes. Can I write it x plus y whole square minus xy? Tell me. Yes. तो बच्चों जब आप x plus y करोगे then it will be 5 minus 2 root 6 plus 5 plus 2 root 6 whole square and minus, and when you solve it x into y, that will gives you what? 1. So that will be cancel out this 5 plus 5 10, 10 square minus 1. So that will be 100 minus 1. Your answer will be 99. Is it clear to everyone? Yes or no? Clear है भाई? 100 minus 1 will be what? 99. Clear? 4 marks का बच्चों important question रहेगा. I will just repeat it. What is given to me बच्चों? The value of x is given to me and the value of y is given to me. And what they want? Evaluate the value of x square plus xy plus y square. And I am going to be what? Yes, I am going to simplify x by rationalization. It is root 3 minus root 2 divided by root 3 plus root 2.
When I'm going to rationalize it, it will be root 3 minus root 2 and root 3 minus root 2. So numerator will be a square minus b square, and it will be a minus b whole square. Clear? When we solve it, it is a square plus b square minus 2ab divided by 3 minus 2 will be 1. And what should we get? We get 5 minus 2 root 6. हमको बच्चों क्या मिला? 5 minus 2 root 6, which is the value of x. Similarly, we get the value of y as what? 5 plus 2 root 6. And what we do here? We will write this expression as x plus y whole square minus xy. Okay, x plus y whole square minus of xy. And x plus y whole square will be 10 square minus 1. That will be 100 minus 1 will be what? 99. Clear hai sabko? If anybody have any doubt, then tell me. I don't think anybody have doubt. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने बच्चों 4 मार्क्स का अनदर गुड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफाई करना है बच्चों. रैशनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक इट ए, take it as b and take it as c. Okay, yeah, now start solving. I am solving a first. It is 2 over root 5 plus root 3. When I simplified it, it will be root 5 minus root 3 divided by root 5 minus root 3. Okay, so now it will be 2 root 5 minus root 3 divided by 5 minus 3. So that will remain what? Root 5 minus root 3 only. Clear? What I am solving? I am solving just A. Going for B. B is what? 1 over root 3 plus root 2. When simplified it, it will be root 3 minus root 2 divided by root 3 minus root 2. ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे हम इसको. तो इट विल बी कमिंग अप व्हाट? रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2. वैल्यू ऑफ बी विल बी रूट 3 माइनस रूट 2. कमिंग फॉर पार्ट सी, इट इज व्हाट? 3 अपॉन रूट 5 plus root 2, and when we going to simplify it, it is root 5 minus root 2 divided by root 5 minus root 2. Okay, चलिए फर्दर बात करेंगे हम बच्चों. तो it will be 5 minus 2 and it will be 3 root 5 minus root 2. सिंप्लीफाई कर रहा हूं बच्चों में इसको. तो it will be 3 root 5 minus root 2 divided by 3. 3 is cancelled out by this, and now what I have to do? I have to do a plus b minus c. A is what? Root 5 minus root 3. B is what? Root 3 minus root 2. And c minus c will be root 5 plus root 2. Root 3 cancel out, root 2 cancel out, and root 5 cancel. What remains? Finally we get 0. That means B part is our right answer. I think that should be clear to all of you. Yes or no bachcho? Yes or no? Simply what we do bachcho in this question, what I am doing, I will take it as A, take it as B, and take it as C. Okay, what I am doing here, simplifying A, simplifying B, and simplifying C, and finally solve it A plus B minus of C. Okay, and getting the value what? 0. Clear everybody? Go to the next. Yes, this question comes in your NTSC exams. Yes, MP NTSC में बच्चों 2015 this question comes already. Again we have to simplify it.
So this is very easy. What we do, I am taking the LCM. What? Root 5 plus 2 and root 5 minus 2. Solving it, it will be root 5 minus 2 whole square plus of root 5 plus 2 whole square. ठीक है जी, चलिए, it is a minus b whole square, that means a square plus b square minus 2ab, 4 root 5 plus a square 5 plus b square 4 plus 4 root 5 divided by a square 5 minus b square 4. 4 root 5 is cancelled out by 4 root 5. और बच्चों जब आप करोगे सम 5 plus 4 9 9 18, that will be 18 over 1 and your answer will be what? 18. So that means B part will be what? Right answer for this question. I think that will clear to all of you. Yes or no? Clear है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, तो अभी हमने बात की आपसे टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम, एंड नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट गाइस? यस, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? पॉलिनोमियल्स. अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स विच इज योर चैप्टर नंबर 2. क्या है आपका ये चैप्टर नंबर, क्या है बच्चों? 2 है. चलें, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले. If px is equal to this, मतलब बच्चों आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन द वेरिएबल ऑफ x, एंड व्हाट दे आर आस्किंग p of -1. okay, so what you have to do, you have to put x is equal to -1 in this whole expression. That means it will be 2 minus 1 by 2 plus of -1 whole square minus of -1 cube divided by 3. 2 minus 1 by 2 will be 3 by 2 plus 1, और बच्चों -1 cube will be -1, that will be 1 by 3. But if I am taking the LCM, that will be 6, 2 3 ja 6, 3 3 ja 9 plus 1, 3 2 ja 6 plus 2. That will be coming what? Yes. Okay guys, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. यस, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर यू 4 मार्क्स. इफ x square minus 4 is a factor of this, if x square minus 1 is a factor of this, where a and b are constant, आपको बतानी है a और b की वैल्यू. I'll give you 60 seconds. Let's try it. क्या आप कर पाते हैं या नहीं? चेक इट. या x square minus 4 is a factor of this. तो guys, can you tell me if x square minus 4 is a factor, that means x square minus 4 is equal to 0. And can I write it x minus 2 x plus 2 is equals to 0? Yes or no? Yes. And that means x will be 2 and minus 2. So what I am going to do, I am putting x equal to 2 once a time in this. So that means 2 cube plus a 2 square plus b multiplied 2 plus 12 is equal to 0. 2 cube will be 8 into 2 16 plus 4a plus 2b plus 12 is equal to 0. 4a plus 2b plus 28 is equals to 0. What I am getting guys, मुझे मिल गई बच्चों a और b में एक इक्वेशन. ठीक है. Similarly, what I am going to do? I am going to do minus 2 here. So that will be 2 multiplied by minus 2 whole cube plus of a
multiplied by minus 2 square plus of b multiplied by minus 2 plus 12. Clear? चलिए, now it will be 2 minus 2 whole cube will be minus 8 plus of a minus 2 square will be 4 minus 2b plus 12. Okay, minus 16 plus 4a minus 2b plus 12 is equals to 0. And that will be simplified as 4a minus 2b minus 4 is equal to 0. Now we have equation number 1 and equation number 2. When we take it out both, that will be 4a minus 2b minus 4 is equals to 0. Clear है बच्चों? पक्का? Yes or no? जल्दी बोलो. पक्का? चलिए सॉल्व करें. तो बच्चों ऐड करोगे 2b कैंसिल आउट, इट विल बी 8a plus 24 is equals to 0. a will be minus 24 divided by 8, it will be minus 3. तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास? a will be minus 3, and when I am putting a here, 4 into minus 3 minus 2b minus 4 is equal to 0. It will be minus 12 minus 2b minus 4 is equal to 0. Minus 2b is equal to 16 and b is equal to minus 8. So value of a is minus 3 and value of b is minus 8. Yes or no? Another important question of topic polynomial in 4 marks. You can take the screenshot also if you want. Yes बच्चा पार्टी आप screenshot दे सकते हो. It's an another important question for CBSE this year. Okay. Next question. The value of this. 45 seconds I will give you. Can you do it? Try it. बिल्कुल बच्चों, I will tell you a formula that is x plus y plus z whole square. That is a small hint. You can try. चलिए बिल्कुल वो फॉर्मूला रिकॉल करा दूं मैं आपको पहले. फर्स्ट वी हैव टू रिकॉल दैट फॉर्मूला. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? फॉर्मूला इज x plus y plus z whole square will be what? X square plus y square plus z square plus of twice of xy plus yz plus zx. क्लियर है? चलिए अब द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस. अब बच्चों पहले आई एम ओपनिंग फर्स्ट ब्रैकेट. लुक इट, एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर विल बी 4y स्क्वायर, 2z होल स्क्वायर विल बी 4z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x into y will be 2xy plus of y into z will be 4yz plus z into x will be 2xz. ओके चलें आगे. नेक्स्ट a minus b minus c whole square will be a square plus b square will be 4y square plus c square 4z square plus twice of x into y, it will be 2xy plus of 4yz plus 2xz. Clear everybody?
चलिए नाउ वी एड इट, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, देन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, 2x square, 4y square and 4y square will be 8y square, 4z square and 4z square will be 8z square. Okay, and now see 2 into 2xy will be 4xy and 2 into 2xy will be what? अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, इट विल बी x माइनस 2y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2xy, माइनस 2y इंटू माइनस 2z विल बी, just a minute, up just we have to just check it, not to worry, we have to rewrite it, yeah, because there are minus sign, okay, yeah, not to worry. चलिए twice of x into minus 2y will be minus 2xy, y into z will be plus 4yz, and z into x will be minus 2zx. So guys, this 2xy will be cancelled out, this 2xy, and 2xz will be cancelled out with this 2xz. So guys, that will be what, 4yz into 8yz plus 8yz will be what, 16yz, and my answer was D part. Clear? So you have to remind mainly this formula. Clear everybody? Yes or no? पक्का? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन व्हाट शुड वी गेट। बच्चों इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलता है ये बताना है आपको, ठीक है, चलिए बता दीजिए। व्हाट आई हैव टू डू नाउ, यस I have to apply the formula a plus b whole cube, that will be a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b plus of a cube minus b cube minus 3ab bracket a minus b। क्लियर है गाइज? और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड इट विल बी 6a क्यूब माइनस 6ab स्क्वायर। क्लियर? लुक इट, b क्यूब इज कैंसिल आउट बाय b क्यूब एंड दिस b, नो, सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब प्लस इट इज 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ a क्यूब, it is minus of 3a square b plus of 3ab square plus of 6a cube minus 6ab square. Now guys, you can see that it is 3ab square plus 3ab square, 6ab square, and this will be cancelled out, 6 square. Okay, and 3a square b is cancelled out by this. And now what is a cube plus a cube, 2a cube and 6a cube will be what? Finally it will be 8a cube. Is it clear guys? Yes or no? Jaldi bolo. It is what? 8a cube. So D part is your right answer. Okay? Chaliye. Next. Factor of this polynomial will be, अब जो फैक्टराइज करने का आपको मैंने तरीका बताया था, यस, मिड टर्म स्प्लिटिंग इसमें नहीं लग पाएगी बिकॉज इट्स एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। गो फॉर इट। Yes, you have to tell me the factor of this polynomial.
देखिए बच्चों, इसको अपन ओरल ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट में क्या है, बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन टू मी +24, लुक इट, कौन कौन पॉसिबल है। देखिए 2 इंटू -3 इंटू -4 पॉसिबल है। सिंपल काम करना है बच्चों, आप क्या कीजिए, ए पार्ट को पिक कीजिए, यहां से आपको मिलेगा x = 2 -3 and 4. If all these three will satisfy it, then that are the factors. So like that you can check it and you will get surely your answers. Okay, next. Yes, next topic, दो टॉपिक की बात हमने की बच्चों अभी तक, नंबर सिस्टम और व्हाट, नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक है, वापस मिल रहे हैं हम 2 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे। ओके, चलिए बच्चों, यस, नाउ स्टार्ट अनदर टॉपिक विच इज व्हाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी द साइंटिस्ट नेम? हु गिव्स द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोई बताएगा मुझे? विच साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? यस और नो, जल्दी बता दो। Which scientist give the concept of coordinate geometry? Yes, that is Rene Descartes. Rene Descartes gives the concept of coordinate geometry. ना सिंपल बात करें बच्चों, दैट इज माई कार्टेशियन प्लेन, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस पॉजिटिव, y axis positive, x axis negative and y axis negative. X, these are our 4 quadrant, first quadrant, second quadrant, third and fourth. अब बच्चों देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे ऑल हैव x positive, y positive. You see x positive, y positive, but in the second quadrant x is negative, y is positive. And while you are seeing in the third quadrant, both x and y will be negative. Clear everyone? Clear everyone? Okay. And the fourth quadrant, x positive, y negative. Clear है? चले आगे, पक्का? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लॉट द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स as points in the Cartesian planes. What you have to do, guys? You have to plot all these points on the Cartesian plane. चलिए, I will take a Cartesian plane. चलिए, I will take the name of these points. Okay, take it as P. So that means P will be -3, 5. Second, I'll take Q, R, S, T, U. Q will be what? -2.5, 0.
R will be 8 comma 3.5, S will be 4 and 8, T will be 0 and minus 2, and U will be minus 5 and minus 5. Okay, what is the value of P? Minus 3 and 5. बच्चों, what we see that X is negative, Y is positive. That means quadrant will be the second, X will be minus 3. So you can plot line like this on minus 3. Y will be 5 here. You can plot line like this. And where these lines intersect each other? At point P. Clear है बच्चों? चलिए, coming to point Q, minus 2, 5 and 0. बच्चों, y coordinate is 0. That means this point is on x-axis, and minus 2.5 between the minus 2 and minus 3. So that is the location for point Q. Minus 2.5, 0. And that is your minus 3 and 5. Next is point R, which is what? 8 and 3.5. Both are positive. X positive as well as Y positive. That means that will lie in the first quadrant. X is 8 here. So you can plot the line like this. And Y is 3.5 between 3 and 4. You can plot like this. अब इसके लिए आपको बच्चों you have to use graph paper and proper scaling in your exams. Okay, graph paper and proper scaling. That is your point R. Next is point S, 4 and 8. X coordinate are 4 and Y is 8. Like this. Okay. Point S, 4, 8. Is it clear? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट? टी. टी में क्या देख रहे हैं बच्चों हम? x coordinate is 0 and y coordinate is minus 2. Guys, x coordinate is 0. That means this point is on at y axis. 0 and minus 2, like this. That is your point T. Last point U, x negative and y negative. In which quadrant? Third quadrant. चलिए, x is minus 5 like that, y is minus 1 like that. Okay, so that is your point U, minus 5 and minus 1. That is called representation or location of points. Yes, 4 marks में एक question from this type surely asking to you. Class 9 students, keep it in mind. Okay, next. Now, the area of quadrilateral whose coordinates was this. Now you can say, sir, we don't know the formula of area of quadrilaterals. But what I am saying to you, not to worry, bachcho. If you don't know the area of quadrilaterals, no issue. What you can do, बच्चों, quadrilateral से बीच में आप एक line join करा दीजिए and make this point as A, B, C and D. Plot it like this: A, B, C and D. Is it a quadrilateral? 1, 2, 6, 2, 5, 3 and 3, 4. So what you can do, guys, take it as A1, take it as A2. What you are seeing, this quadrilateral is a mixture of two triangles, and you know the formula for area of triangle, which is what? Half of magnitude of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus of y1 plus x3
y1 minus y2. Is it clear? That is the formula for area of triangle. So yes, you can find a1 and a2, and finally for total area of quadrilateral, will be a1 plus a2. Clear? Yes or no? चलिए next, if point this and this are collinear. जी हाँ बच्चों, अब आपको क्या है, there are 3 points are given to you and what the question says to you, these points are collinear, then value of p will be, आपको बतानी है p की वैल्यू. ठीक है, what I am telling you, 3 points are collinear if delta is equal to 0. You can take it as x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Okay, फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, that will be x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equals to 0. ओके, चलिए x1 की वैल्यू पुट करें 5, y2 minus y3 p minus 2 plus x2 1, y3 minus y1 1 plus x3 4, y1 minus y2 is equals to 0. 5p minus 10, 2 minus 1 into 1 plus 4 minus 4p is equals to 0. Clear? 5p minus 4p will be what? P, and it is minus 10 plus 5 is equals to 0. So guys, p minus 5 is equals to 0 और आपकी p की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 5. You will get the value of pH 5. Hope so it is clear to all of you. Yes or no? Okay. Go with next. The area of triangle whose vertices are this and this are. अब क्या है बच्चों, आपको ट्राइंगल की वर्टाइसेस दी गई हैं. यू कैन टेक इट x1 y1, x2 y2, x3 y3, and you have to find the area of that triangle. And you know that the formula for area will be half of magnitude of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ओके, चलिए हाफ ऑफ x1 की वैल्यू है बच्चों आपकी a, y2 इज c minus y3 will be c plus a plus of x2 a, y3 minus y1, y3 is c minus a minus y1 will be minus c minus a plus of x3 minus a, y1 minus y2, c plus a minus c. C will be cancelled out by c, c will be cancelled out by c, and c will be cancelled out by c. Okay बच्चों, let's see. Now you can easily solve it. Yes or no? जल्दी बता दो. नहीं कर पाओगे, I will finish it. A into a will be a square. This is minus a and minus a, minus 2a, that will be minus 2a square, and that will be minus a square. A square finish, और बच्चों मैग्नीट्यूड लगाए तो बाहर आएगा 2a square divided by 2,
final answer will be a square. I don't think anybody should have any type of confusion. Yes or no? जल्दी से बोलो. पक्का. चले आगे. Okay. The point which divides the line segment. Yes, section formula पर भेजते बच्चों ये question. Which divides the joining of the points 7, -6 and 3, 4 in the ratio of 1:2 internally. What you have to do? You have to make a line first. P Q. Point P is what? 7, -6. Point Q is 3 and 4. Take it point P as x1, y1, x2, y2. Okay. चलिए, and I will take that point is suppose K, which divided into 1:2. And what the formula we will tell? That is mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. That is a value for you m, and that is a value for n. Okay, चलिए, mx2 1 into x2 will be 3 plus nx1, n will be 2, x1 will be 7 divided by m plus n, 1 plus 2, my2, m is 1, y2 is 4, ny1 2 into -6 divided by m plus n, 1 plus 2. Okay बच्चों, चलिए, so that will be 3 plus 40 divided by 3, and that will be 4 minus 12 divided by 3. So that will be 17 by 3 and minus 8 by 3. The point of K will be what? Point K के coordinates बच्चों हमको क्या मिले? Yes, we get the coordinates as 17 by 3 and minus 8 by 3. अब tell me, x is positive, y is negative. In which quadrant this lie? You all have to be reminded very carefully. In the fourth quadrant, x positive, y negative. So this point lie in your fourth quadrant. Yes or no, बच्चा पार्टी? पक्का? Next. Next topic अपना कौन सा है? Chapter number 4, linear equation in 2 variables. और सबसे सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों जो आपसे पूछा जाएगा, ax plus by plus c is equal to 0. Suppose this equation is given to you, 3x plus 2y is equals to 12. आपसे पूछेंगे write down the value of a, b, c. So you have to simplify it like that. 3x plus 2y minus 12 equals to 0, and write down the basic equation ax plus by plus c is equal to 0. In that case, a is equal to 3, b is equals to 2, c is equal to minus 12. A is equal to 3, b is equal to 2, and c is equal to minus 12. Is it clear? पक्का? ठीक है, सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो जनरली आपसे पूछा जाएगा. What next they can ask? First question on your display. The value of x which satisfy this equation will be, because this is objective, then what you can do? You can do it by option checking. I'm going to put x will minus 1, so that will be minus 6 plus 5 upon minus 4 plus 7 LHS. So that will be minus 1 by 3 LHS. Putting in the RHS, minus 3 plus 5 divided by minus 2 plus 6. That will be 2 by 4 will be 1 by 2. So that is wrong.
Coming on to B part, putting B, 6 plus 5 divided by 11 is equals to 8 by 8. It is 11 by 11 is equals to 8 by 8. 1 is equals to 1. So you can see that B part will be the right answer. Yes, directly you can put the value of x. Yes, and you can verify the results. Is it clear guys? Yes or no? बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटर है इस चैप्टर के जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है. यस, विच इज व्हाट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ, ओके, 1/3 ऑफ, 1/2 of a number. Let number is x equals to 12. So that will be 4 3 are 12 into 24 is equals to 12. And x will be 24 into 12. So that will be going what? 288. Another good question of your 2 marks. Clear everybody? Yes or no? Paka? Next. Equation which represent the graph. Simple सी बात. तो आपने क्या करना है बच्चों? You have these 3 points. आपके पास क्या है? These 3 points. Take it as P, Q and R. Which equation satisfy all these 3 points? आपने क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को पुट करके देखना है बच्चों. Which equation satisfy? That is your answer. Okay. Next. Which equation is another form of this? Okay. चलिए, let's see. चलिए सिंप्लीफाई करें इसको. तो कैन आई राइट इट? फर्स्ट इक्वेशन के एंगल से देखें बच्चों तो इट विल बी 6y इक्वल्स टू x प्लस 12, y इक्वल्स टू x अपॉन 6 प्लस 2. नॉट मैचिंग. x के एंगल से बात करें बच्चों तो इट विल बी 6y माइनस 12 टू x. So that means C part will be the right answer for this question. Okay. Go with the next. Yes. What is given to you बच्चों? अब यहाँ पर है total variables 3. If x is equals to z, putting here 3x minus x is equal to 4, 2x is equal to 4 and x will be 2. अब बच्चों x इक्वल टू y है ऑलरेडी. देन व्हाट आई हैव टू डू? x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6. x की वैल्यू 2, y विल बी 2 एंड z वी हैव टू फाइंड आउट. दैट मींस z इक्वल टू 6 माइनस 4. वैल्यू ऑफ z विल बी 2. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? बी पार्ट. So that's all for today class बच्चों. Yes, tomorrow we will meet you another class. Thanks a lot. Let's crack 9th and 10th CBSE चैनल को सब्सक्राइब करें. Yes, सब्सक्राइब करें चैनल को. And thanks a lot for your lovely attention. SPAG10 Spec 10 is my code. If you are planning for any subscription with Unacademy, you can apply it for getting 10% off. Okay guys. Till then, goodbye, take care, meet you once again tomorrow.